नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने थर्ड लेक्चर जो हमारा रहेगा फॉर्म्स एंड मूवमेंट में, वो रहेगा रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। राइट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका एलटी मेंस में। फॉर एग्जांपल, राइट एन एसे on romanticism. Right, this is very important. Write an essay on romanticism. So this romantic word is very important, right? And as you know that कि romantic जो होता है वह that this follows after Elizabethan, after neoclassical period. और यदि आप रोमांटिक पीरियड को देखेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोयम, राइट, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीरियड. द ग्रेटेस्ट पोएट्स वर born in this time. They wrote their poems during this period. And you know that in 1789 there was French Revolution. French Revolution, right? You find that Thomas Carlyle has written a book. Thomas Carlyle has written a book called The French Revolution. So the French Revolution, this brought three elements, and this is called liberty, this is called fraternity, and then you have equality. This is the three element, liberty, fraternity and equality. ऐसी बात उठी कि व्यक्ति को लिबरल, फ्रेटर्निटी माने विश्व बंधुत्व और इक्वलिटी माने समानता की बात होनी चाहिए. तो बेसिकली व्हाट इज रोमांटिक? ए रोमांस क्या है? राइट, दिस इज समथिंग दैट नॉर्मली वी लाफ. जब हम रोमांटिक की बात करते हैं तो नॉर्मली देयर इज एन आइडिया दैट वी सी इन अ फिल्म. पिक्चर में देखते हैं कि इट्स वेरी रोमांटिक मूवी, राइट? दिस इज अ रोमांस, देयर इज अ रोमांस. बेसिकली वी थिंक अबाउट द लव अफेयर बिटवीन वन फीमेल एंड वन मेल, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक. हाउएवर, मेरे अनुसार रोमांटिक का मतलब ही क्वाइट अपोजिट होता है. रोमांटिक शब्द बड़ा अपने आप में अजूबा है, और इसको समझने के लिए हमें पहले क्लासिक जानना पड़ेगा. व्हाट इज क्लासिक? राइट, रोमांटिक समझने के पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज क्लासिक. क्लासिक क्या है? टी.एस. एलियट ने एक एसे लिखा है, टी.एस. एलियट, एंड द एसे इज व्हाट इज क्लासिक. व्हाट इज क्लासिक? क्लासिक क्या है? क्लासिक का जो विरोध है दैट इज रोमांटिक. तो क्लासिक का अपोजिट होता है, दिस इज कॉल्ड रोमांटिक. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड इंग्लिश पोयम, जैसे कि यदि हमारे भारत में दो भगवान हुए हैं, एक भगवान राम, एक भगवान कृष्ण, दोनों बड़ा अंतर दिखता है. भगवान राम ट्रेडिशनल, क्लासिक, he is person who always maintained decorum, हमेशा डेकोरम की बात करते हैं. ये हो गए भगवान. यदि हम बात करेंगे भगवान राम. दूसरे तरफ लॉर्ड कृष्णा है, जो कि कंप्लीटली अपोजिट है. लॉर्ड कृष्णा कैसा है? लॉर्ड कृष्णा कंप्लीटली अपोजिट है. उनको वो जो है इस सब की बात नहीं करते. नहीं आ रहा है उनके निगाह में. मतलब
मतलब स्वच्छंद जिसको हम बोल सकते हैं, स्वच्छंदतावाद, या हिंदी जिसको हम छायावाद बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, उसमें हमारा एक फॉर्म आता है छायावाद, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो इन दो, ये जो रोमांटिक पीरियड था, यह एक प्रकार का पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, जिसने बात रखी कि हमें अब रोमांटिक पीरियड, मतलब हमें अब कुछ नई चीजें, एक रिवोल्यूशन करना चाहिए अगेंस्ट द क्लासिकल रिजिडिटी ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड। एक जो न्यू क्लासिकल था, मैंने भी समझाया था, उसमें एक रिजिडिटी आ गया था, रिजिडिटी, both in terms of form and content. फॉर्म एंड कंटेंट दोनों में रिजिडिटी आ गया था। ऐसा बात होने लगा कि न फॉर्म सही है न कंटेंट सही है, ठीक है, ये हो गया रिजिडिटी। डेकोरम जैसी बात हो रही थी, डेकोरम, एक डेकोरम की बात हो रही थी ना, न्यू क्लासिकल, तो थोड़ा सा न्यू क्लासिकल ध्यान रखिएगा। एक जो पोएटिक डिक्शन था, वह था ना अर्बन, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, ऐसा बात हो रही थी कि एक सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, एक सोफिस्टिकेटेड, एक स्नोबरी था, एक दिखावा था, यू नो। देयर वाज, जैसे हमने कहा कि द पोएम वाज सेंटर्ड अबाउट अर्बन लाइफ, शहर की बात हो रही थी, शहर की बात हो रही थी ना। रिस्ट्रेंड था, एक रिस्ट्रेंड था। तो इन सब के बाद जब पोएम लिखा गया रोमांटिक पीरियड में, तो ऐसा माना गया कि इस तरह की पोएम सबके समझ में नहीं आता, हम एक पोएम कॉमन मैन की बात करेंगे, राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन। एक सिंपल सी बात करेंगे, बहुत बड़ी, जैसे एब्सलम एंड एचिटोफिल, बहुत बड़ी पोएम है, एक पॉलिटिक्स है, एलेगरी है, रेप ऑफ द लास्ट, या इसमें भी पॉलिटिक्स है, सिल्फ है, बिलिंडा की बात हो रही है, ऑल फॉर लव, या आप स्पेक्टेटर क्लब पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर फ्रॉम अपर क्लास, कोई छोटी चीजों की बात नहीं करता था। तो जब रोमांटिक पीरियड आया, where romantic period emerged in the history of English literature, probably 1789, then ऐसा सोचा गया कि why should we not talk about common thing, हम क्यों ना we should talk about common subject, हम कॉमन सब्जेक्ट की बात क्यों ना करें। और इसी कॉमन सब्जेक्ट की जो बात होती है, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक। आखिरकार एक जो कॉमन सब्जेक्ट है, एक कॉमन सब्जेक्ट, ऐसी बात हुई कि हमें कॉमन सब्जेक्ट की बात करना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट, राइट, ऐसी बात उठी कि वी शुड टॉक अबाउट कॉमन सब्जेक्ट, राइट, वी शुड टॉक अबाउट we should talk about, you know, that we should talk about common subject, common subject, we should talk about common subject. What is this common subject? This common subject means common person, common people, common life. हम कॉमन की बात करेंगे, एक सामान्य वर्ग की बात करेंगे, सामान्य चीजों को पकड़ेंगे। जो हमारा पोएम शहर में सेंटर था, दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, रूरल लाइफ, और अर्बन से हट करके, नॉट फ्रॉम अर्बन लाइफ, दिस विल बी रूरल लाइफ। यह बात उठी कि द पोएम विल बी ऑफ रूरल लाइफ, नॉट अर्बन लाइफ, ये बात उठने लगी। तो कॉमन सब्जेक्ट प्लस रूरल लाइफ, इसकी जो बात उठी, समझ आ रहा है, ये बात किया। और इसके बाद जो है, बेसिकली यदि आप देखेंगे, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1798, लिरिकल बैलेट्स। एक लिरिकल बैलेट्स किताब थी जो कि पहली बार छपी 1798, एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस किताब ने पहली बार कहा कि this was the endeavor of William Wordsworth and St. Coleridge. Preface to lyrical ballads, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस प्रीफेस William Wordsworth is talking about certain thing, that poetry should be subject of common man. The subject matter is taken from common life. The poem should be written in a common language. उन्होंने कहा this common word is very important. The poem should be the subject for common man, common people, right? That is the common subject. This is you find in preface to lyrical ballads. एंड दैट्स वाई जो रोमांटिक पीरियड है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि देर आर सर्टेन फीचर्स, उसमें एक है नेचर। उन्होंने कहा बैक टू नेचर, हम नेचर की ओर चलेंगे, प्रकृति की बात करेंगे। प्रकृति, जैसे आप हिंदी में रोमांटिक पढ़ेंगे, सुमित्रानंद पंत ने अपनी पोएम प्रकृति के बारे में लिखा है, बादल, झरना, पेड़ पौधे। तो इसी तरह से आप रियलिटी में आप देखेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड है वो टिंटर ने भी है। इन लोगों ने कहा कि वी विल टॉकिंग अबाउट नेचर, एंड टिंटर ने भी इज ए पोएम दैट टेल्स अस द सब्जेक्ट अबाउट कॉमन मैन, प्रकृति की बात करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए लूसी पोएम है ना, दैट इज वेरी फेमस पोएम, दैट्स व्हाट वर्ड्सवर्थ हैज रिटन, लूसी पोएम, वेर ही इज टॉकिंग अबाउट that the subject of a poem is common man, common subject. Lucy is a child who is born in the atmosphere of nature. Nature will be the guiding figure of Lucy. Nature will treat her like her own kid. That this is what Wordsworth says, and Wordsworth says that Lucy will learn from she will learn a lesson. And what will be the lesson? She says that she will learn a lesson. And what lesson she says she will learn? She will learn a lesson. The lesson that she will learn is a form and content. This is what he says. He says that Wordsworth, he says that Lucy will learn a poem. It is called form, restraints, or education. So then Wordsworth says that Lucy will learn everything from nature. 3 years she grew in sun and shore, then nature saw lovelier flower. That's what Wordsworth is saying. So you find in Tinter maybe that the subject is metaphysics. You know that if you read Wordsworth, then there is a there is sensuous imagery. There are 3 stages of the transformation of a poet's life. Then Wordsworth addresses his sister Dorothy, etc. Wordsworth has also written a poem called Ode on the Intimation of the Immortality. इस पोएम को ही पढ़ लीजिएगा, Ode on the Intimation of Immortality. Ode on the Intimation of Immortality. This is another poem by William Wordsworth. This is called Ode, right? So that is the poem. तो अब आप देखेंगे रोमांटिक पीरियड आपसे पूछा जाएगा,
just simply you will have to write that Romanticism starts with the publication of lyrical ballads in 1798. Aftermath, the upsurge from the French Revolution in 1789, that in fact advocated for the three basic elements: liberty, fraternity and equality. एंड उसके बाद आपको पोएम के बारे में लिखना है, हाउ वर्ड्सवर्थ is defining poem, what is his theory about about poem, that it must have a common subject, common life, and then you should mention some of his poem, right? तो इतना जरूर पढ़िएगा. This is what we call romantic period. So that is how, if you read romanticism, you find that there are certain writers, like certain writers means that these writers, they are talking about they are discussing against the theory of certain neoclassical theories, certain neoclassical values that happened, right? So lyrical ballads, and then you find preface to Shakespeare where he says that statement of revolutionary, and then there is a decorum, they don't follow decorum. तो इसके पहले आप प्री रोमांटिक देखेंगे. कल मैं बता, इन माय प्रीवियस लेक्चर आई वाज टीचिंग यू व्हाट इज प्री रोमांटिक, एंड इन प्री रोमांटिक यू फाइंड दैट देयर वर पोएट्स लाइक एस.टी. कॉलरिज, no sorry, like William Collins, like you have Charles Lamb, like you have Thomas Gray. So these writers are, this is called Age of Sensibility. Dr. Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, who has written a poem called The Deserted Village. So you should write the certain characteristics of romanticism, और उसके बाद आप दिखाएंगे कि हाउ द नेचर वाज द मेन फोकल पॉइंट, बैक टू नेचर वाज द basic subject, you know that, and they are talking about freedom. They are talking about freedom, and freedom in what sense? Freedom in sense that you know, Rousseau says, he says man is born free, but everywhere he is in chain. वो कहता है कि आदमी जो है स्वतंत्र तो पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वो बंधा हुआ है. ये रूसो इज द मेन थिंकर. लॉक एंड रूसो इज द मेन थिंकर ऑफ romantic movement, right? Rousseau is the main thinker of romantic movements, and therefore that is how you find this, that there is a romantic sensibility, that they are talking about nature. And then as I told you that certain, so if you discuss about romantic movement, basically just you say that mention William Wordsworth, then mention S.T. Coleridge, who has written a poem called The Rime of the Ancient Mariner, right? This is very important. Rime of the Ancient Mariner. And then we come to, so that is how these are writers. तो इसके बाद हम आते हैं, जब आप देखेंगे रोमांटिक में, तो टू टाइप्स ऑफ रोमांटिक राइटर. वन इज कॉल्ड एल्डर रोमांटिक, जिसमें आपके हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, right? Wordsworth, Coleridge and Byron. And then you have younger romantic. In Indo-Romantic, you have P.B. Shelley and
जॉन कीट्स। तो बेसिकली यू विल हैव टू मेंशन दीज राइटर्स, पीबी शेली एंड जॉन कीट्स। और इन्हीं राइटर के पोएम को आप एक्सप्लोर करिएगा इन योर रोमांटिक मोमेंट में। तो बेसिकली जब आप पीबी शेली को देखेंगे तो पीबी शेली का जो आपके सिलेबस में है वो है ओड टू द वेस्ट विंड। Ode to the West Wind, right? And then P.B. Shelley has also written Ode to a Skylark, right? He has written Chenchi. He has written Prometheus, Unbound, right? Byron has also written Manfred. It is his play. Then he has written Don Juan. तो इन सारी चीजों को आप दिखाइएगा। और when you write about these writers, you simply find that all these writers, they write about common subject, they write about common sensibility, right? Nature, there is a revolutionary idea. So this is very important, right? That is how this is a romantic period. यदि आप कीट्स पे आते हैं तो जॉन कीट्स इज, आप देखेंगे जॉन कीट्स इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पोएट। और जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज डिस्क्राइब्ड आल्सो इन क्लास 12 में, सीबीएसई यूपी बोर्ड में है, तो इसमें से जरूर क्वेश्चन उठना चाहिए। 1795 1821। जॉन कीट्स इज राइटर ऑफ सेंसुअसनेस, Hellenistic approach, and then his theory is called negative capability, right? एक बात कहते हैं जॉन कीट्स, लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन थॉट्स। वो कहता है कि लाइफ ऑफ सेंसेशंस रादर देन थॉट। जॉन कीट्स कहता है कि जीवन में हमें लाइफ ऑफ सेंसेशन देखना है, न कि लाइफ ऑफ थॉट्स। और दैट्स व्हाई ही सेज दैट इफ पोएट्री कम्स नॉट एज नेचुरली एज लीव्स टू अ ट्री, ही सेज दैट इफ पोएट्री does not come as naturally as leaves from the tree, then it doesn't come. दिस इज व्हाट ही सेज। ही सेज कहता है कि नेचुरली, पोएम हमारे अंदर नेचुरली आना चाहिए, हमारे अंदर पोएम को थोपा नहीं जाना चाहिए। पोएम इज नॉट द सब्जेक्ट दैट इज कमिंग बेसिकली इन अ वेरी you see that by force. You cannot force to write a poem. Rather, poem should be the subject of not a force, rather this should be the subject of natural instinct. And this is what, यदि आप definition देखेंगे poem का by Wordsworth says, what Wordsworth says? Wordsworth says that poetry is spontaneous, overflow of powerful feeling. This is the definition of Wordsworth. He says that it is the recollection,
reflected in tranquility, right? Reflected in it is the reflection reflected in tranquility. So that is how he defines poetry, spontaneous overflow of powerfully. So recollection and spontaneity. Spontaneous word is very important. Spontaneous means तुरंत, बिना बाई, विदाउट फोर्स, विदाउट, हमारे फोर्स नहीं होना चाहिए. We should not write a poem by force. Rather, we should write a poem by our own wish. Right? Poem should not be. It should not be written by force. Rather, it should be written in a natural way. और इसीलिए इसी बात की जो बात होती है, दिस इज कॉल्ड प्रील्यूड. प्रील्यूड आर द ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ. जिसका देखेंगे तो सेल्फ ग्रोथ, ये है सेल्फ ग्रोथ, व्यक्तिगत. तो जो न्यू क्लासिकल पोएम था उसमें सब्जेक्टिविटी आ गई. क्या आ गया? न्यू क्लासिकल पोएम इज अबाउट सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी की बात होने लगी, ऑब्जेक्टिविटी हट गया. ऑब्जेक्टिविटी जो है ऐसी चीज हट गई जो कि न्यू क्लासिकल में था. न्यू क्लासिकल में ऑब्जेक्टिव था. मोस्ट ऑफ द पोएम, सभी राइटर देखा होगा, कोई अपने बारे में नहीं लिखा है. दे आर राइटिंग अबाउट सिटी, दे आर राइटिंग अबाउट पॉलिटिक्स, दे आर राइटिंग अबाउट जेंट्री क्लास, दे आर राइटिंग अबाउट यू नो दैट पॉपुलर कल्चर, पोलाइट कल्चर, सर्टेन थिंग लाइक दिस. आए जो सब्जेक्ट था वो नहीं आया, तो ऑब्जेक्टिव आ गया. और इसीलिए यदि आप डिफाइन करेंगे रोमांटिक को तो सबसे अच्छा है आर्कियोलॉजी ऑफ सेल्फ. आर्कियोलॉजी ऑफ सेल्फ is the main subject of रोमांटिक फील्ड की. ये लोग कह रहे हैं स्वयं अपने आप का आर्कियोलॉजी ऑफ सेल्फ, सब्जेक्टिविटी, आर्कियोलॉजी ऑफ सेल्फ. सो दिस इज व्हाट दैट इज बेसिकली रोमांटिक मूवमेंट्स, राइट. तो इसको जरूर पढ़िएगा और इस तरह के कुछ पोएम को जो आप कोट करिएगा. अब जैसे तो आपके सिलेबस में तो खैर जैसे 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 आपका जो एलटी का सिलेबस है उसी को आप कोट करेंगे तो भी अच्छा नंबर मिलेगा आपको. लेकिन कुछ और आप लिखिएगा जैसे कीट्स. अब कीट्स की जब बात होती है तो कीट्स का जो सबसे प्रिस्क्राइब्ड है ला बेल डैम सेंस मर्सी. यह एक बैलेड है. और उसके बाद आपका सिलेबस में है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा है. जैसे आप उनका सबसे फेमस है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू साइकी, और उनका एक है हाइपीरियन. उसके आगे है एंडिमियन, ऑन लुकिंग चैपमैन्स होमर, ऑन लुकिंग चैपमैन्स होमर, या स्लीप एंड पोएट्री, स्लीप एंड पोएट्री. इन सारे पोएम को आप लोग कोट करिएगा. और जॉन कीट्स इज वेरी सेंसुअस राइटर. ही इज वेरी सेंसुअस राइटर. सब नेचुरल थिंग की बात करता है. एंडमियन, इंडोलेंस, साइकी, नेचुरल, सेल्फ. और बाद में कोटेशन कुछ आप याद कर लीजिएगा. जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन है वह है ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी. ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी.
या एक उन्होंने लिखा है थिंग ऑफ ब्यूटी, इज जॉय फॉर एवर। तो ये पोएम आपके क्लास 12 प्रिस्क्राइब है। तो कीट्स कहता है कि लाइफ में हमारे पास ब्यूटी होना चाहिए, ब्यूटी इन सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी, पॉजिटिविटी। लाइफ में हमें कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए, वॉट एवर इज देयर एब्सोल्युटली राइट, जो भी कुछ है वो सब कुछ सही है। तो दैट्स हाउ दिस पीरियड एंड्स। तो जब मेरे इस लेक्चर का मेन मकसद यही था पढ़ाने का, जरा इसको समझिएगा कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट डिफाइन रोमांटिक, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, just say that it starts with the publication of lyrical ballads in 1798. Certain characteristics that you say that back to nature, natural quality, individualism, humanism, it is a revival, certain renaissance value, right? Then there is a subjectivity, as you know that the line of the subject is a common man, as Wordsworth says that. And then you have after this just only define the nature of poem, some major lines of the writers that is written, और इसके बाद just you should mention that there are elder generation of romantic, there are younger generation of romantic, and then you say that how they are quite different, how elder is different from younger generation, उसको आपको ध्यान देना है। कुछ वर्ड्सवर्थ की लाइन को कोट कर दीजिएगा, इंटर ने भी, मैं पढ़ाऊंगा सेपरेटली इन सबको। Ode and Intimation of the Immortality, Lucy poem. Then you have Manfred, written by Byron, Don Juan, Rhyme of Ancient Mariner, Kubla Khan is a dream, उसको मेंशन कर दीजिएगा, कुबला खान आर ए ड्रीम, इन सारी चीजों को आप मेंशन कर दीजिएगा। तो जब इन सारी चीजों को मेंशन करेंगे, और देन यू हैव और उसी समय नॉवेल भी कुछ लिखे गए थे। तो एक पोएम के अलावा नॉवेल जैसे था जेन ऑस्टिन का नॉवेल हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन ऑस्टिन के बाद जो है आप देखेंगे गोथिक फिक्शन उसी समय लिखे गए थे, गोथिक फिक्शन है ना, द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द विकार ऑफ वेकफील्ड। गोथिक फिक्शन भी लिखे गए थे। तो कुछ फिक्शन को लिखिएगा, देखिए खासतौर से जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, यह संभवतः कुछ रोमांटिक की बात करता है, राइट? that how this is the sense माने something which is logical and sensibility means something which is emotional। तो इमोशन की बात जब होती है, सेली की पोएम को कोट कर दीजिएगा, how he is revolutionary in nature but yes subject is a nature, and then you have S.T. Coleridge, उसके बाद कीट्स पे ला करके आप एंड कर दीजिएगा, प्लीज कोट सम ऑफ द लाइंस ऑफ जॉन कीट्स। इस तरह से मिलाकर के आप आंसर लिखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छा आंसर करेंगे। In my next period, I will take up the poems of these writers. Thank you.